नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर जो है अमेरिका पर टिकी हुई है। वॉशिंगटन में कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद में अब से थोड़ी ही देर बाद ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। भारत में रात के 10:30 बजे यानी 24 मिनटों के बाद अमेरिका के हिसाब से दोपहर के 12 बजे उनका शपथ ग्रहण होगा। ये देखिए, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप शपथ लेने अब कुछ ही देर बाद जाएंगे और ये मौका बहुत खास होगा, ऐतिहासिक होगा। इसकी हर तस्वीर हम आपको लगातार गुड न्यूज टुडे पर दिखाते रहेंगे। इस समारोह के लिए जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। इसके लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों के साथ आला अधिकारी। दो तस्वीरें इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं। ट्रंप कुछ ही देर बाद 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे, जिसकी सीधी तस्वीरें वॉशिंगटन डीसी से आपको दिखा रहे हैं हम। बस कुछ ही मिनट अब शेष रह गए। 22 मिनटों के बाद ये इतिहास लिखा जाएगा। शपथ ग्रहण का काउंटडाउन जो है शुरू हो चुका है। ट्रंप की शपथ यानी 2.0 उनका ये अब शुरू हो जाएगा ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो उन्होंने ना सिर्फ बयान बल्कि कई बातें बोलना शुरू कर दी थी जैसे ही डिक्लेयर हुआ था इलेक्शन, लेकिन अब जो है ऑफिशियल पावर में आने के बाद वो तमाम बड़े फैसले ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो है व्हाइट हाउस की तस्वीरें हैं, माफ कीजिएगा कैपिटल हिल की ये तस्वीरें हैं, और कैपिटल हिल के अंदर तमाम बड़े मेहमान, आला अधिकारी और तमाम राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हो रहे हैं इस ग्रैंड प्रोग्राम में। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के वो उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इसका साक्षी बनेगा, जिसमें तमाम वर्ल्ड लीडर्स भी शामिल हैं। कमला हैरिस और जो बाइडेन इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चार तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। किस प्रकार की तैयारियां, किस प्रकार की सुरक्षा है, किस प्रकार के मेहमान तमाम आज शरीक हुए हैं। सेनेट के तमाम मेहमान, सेनेट के तमाम सांसद जुड़े हुए हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। लंबे समय से इंतजार था, उनके समर्थक इंतजार कर रहे थे। पिछली शाम उन्होंने एक भव्य रैली करी जिसमें लगभग 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। और अब ये ग्रैंड, ये देखिए तस्वीर, पहली तस्वीर में आप देखिए किस प्रकार से एक हुजूम ने उनका स्वागत किया था और उन्होंने संबोधन किया, तमाम वायदे किया और उनको पूरा करने का आह्वान भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और ये एक शुरुआत हो गई है ट्रंप युग की। और बस 20 मिनट अब शेष रह गए। 20 मिनटों के इंतजार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का राज तिलक होगा। 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा उनका बुलंद रहेगा। कई बड़े वायदे किए उन्होंने, जैसे कि आपने सुना होगा लगातार युद्ध रुकवाने की बात करी, मध्य पूर्व के विवाद को सुलझाने की उन्होंने बात करी, बॉर्डर सिक्योरिटी की उन्होंने बात करी, इमिग्रेशन की बात करी, और सबसे बड़ी बात जो है ओथ लेते ही 100 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर वो मंजूरी दे देंगे। ये एक धार बता रहा है, काम की धार, उनकी रफ्तार किस प्रकार से रहने वाली है इस कार्यकाल में, ये इस बात को दर्शाता है। कड़ाके की ठंड, हम आपको बता दें, कड़ाके की ठंड वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त है। और ये ऐसा मौका है जब अंदर कैपिटल हिल के अंदर शपथ ग्रहण हो रहा है। आमतौर पर इस प्रकार का शपथ ग्रहण हमको देखने को नहीं मिलता, लेकिन -6 के आसपास दोपहर में भी टेम्परेचर देखने को मिल रहा है अमेरिका में। और इसी कड़ाके की ठंड की वजह से जो हजारों लोग जुड़ना चाह रहे थे शपथ ग्रहण समारोह में, वो तो संभव नहीं हो सका। वेन्यू में बदलाव किया गया फौरन। -6 डिग्री में ट्रंप रिटर्न्स कर रहे हैं और दुनिया इसकी साक्षी बन रही है। दुनिया के तमाम दिग्गज इसमें शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, ट्रंप ने पहली बार नवंबर 2016 में
राष्ट्रपति चुनाव जीता था और 20 जनवरी 2017 से 20 जनवरी 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और अब 20 जनवरी 2025 को दूसरी बार And that I will well and faithfully discharge. And that I will well and faithfully discharge. The duties of the office. The duties of the office. On which I am about to enter. On which I am about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Vice President. Ladies and gentlemen, please welcome Chief Justice Roberts to administer the presidential oath of office. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President.
is my honor and pleasure to introduce to you the 45th and the 47th President of the United States of America, Donald J. Trump. Thank you very much, everybody. Well, thank you very, very much. Vice President Vance, Speaker Johnson, Senator Thune, Chief Justice Roberts, Justices of the United States Supreme Court, President Clinton, President Bush, President Obama, President Biden, Vice President Harris, and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. America will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country. Sunlight is pouring over the entire world. And America has the chance to seize this opportunity like never before. But first, we must be honest about the challenges we face. While they are plentiful, they will be annihilated by this great momentum that the world is now witnessing in the United States of America. As we gather today, our government confronts a crisis of trust. For many years, a radical and corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens while the pillars of our society lay broken and seemingly in complete disrepair. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home, while at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events abroad. It fails to protect our magnificent, law-abiding American citizens, but provides sanctuary and protection for dangerous criminals, many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. We have a government that has given unlimited funding to the defense of foreign borders, but refuses to defend American borders or, more importantly, its own people. Our country can no longer deliver basic services in times of emergency, as recently shown by the wonderful people of North Carolina, been treated so badly. And other states who are still suffering from a hurricane that took place many months ago. Or more recently, Los Angeles, where we're watching fires still tragically burn. From weeks ago, without even a token of defense,
They're raging through the houses and communities, even affecting some of the wealthiest and most powerful individuals in our country, some of whom are sitting here right now. They don't have a home any longer. That's interesting. But we can't let this happen. Everyone is unable to do anything about it. That's going to change. We have a public health system that does not deliver in times of disaster, yet more money is spent on it than any country anywhere in the world. And we have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases, to hate our country despite the love that we try so desperately to provide to them. All of this will change starting today, and it will change very quickly. My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place, and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history, and I've learned a lot along the way. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Thank you. Thank you. Thank you very much. That is why each day under our administration of American patriots, we will be working to meet every crisis with dignity and power and strength. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race, religion, color, and creed. For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day. It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential election in the history of our country. As our victory showed, the entire nation is rapidly unifying behind our agenda with dramatic increases in support from virtually every element of our society, young and old, men and women, African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, urban, suburban, rural. And very importantly, we had a powerful win in all 7 swing states. And the popular vote, we won by millions of people. To the Black and Hispanic communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust that you have shown me with your vote. जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं।